Do you have investments in shares or mutual funds? Then this one judgment can save you crores of rupees. Hi everyone. So today in this video, I'll be sharing a major tax judgment for investors and corporates under Section 14A of the Income Tax Act. So let's first understand what is the Section 14A of the Income Tax Act. In this act, this section says that when you earn exempt income means जिस पे tax नहीं लग रहा है, then the business expenses related to that exempt income will be disallowed. Fair concept, income पे tax में नहीं लग रहा तो उससे related expenses भी allow नहीं हो रहे. This is Section 14A of the Income Tax Act with Rule 8D. Now here is where the issue starts. The tax officers, they mechanically apply the disallowance under Rule 8D on the entire investment portfolio. मतलब इवन आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जो आपको टैक्सेबल इनकम दे रहा है उसके भी रिलेटेड एक्सपेंसेस डिसअलाउ होने लगे एंड द रिजल्ट वाज अनजस्टिफाइड एंड ह्यूज टैक्स एडिशंस. एंड दिस एग्जैक्ट इशू केम अप इन द केस ऑफ पीटीसी इंडिया लिमिटेड, जहाँ पे असेसिंग ऑफिसर ने मैकेनिकली ये डिसअलाउंस अप्लाई किया एंड इट रिजल्टेड इन अ ह्यूज crores of tax additions by applying Rule 8D on all the investments, even जो exempt income earn कर रही हैं और जो taxable income earn कर रही है. And the Income Tax Appellate Tribunal, the ITAT, in this case gave a very clear and powerful ruling, and I will read this out to you. Only those investments should be considered which actually yielded exempt income during the year. मतलब जब आप रूल 880 अप्लाई करते हो तो सिर्फ वही इन्वेस्टमेंट आप कंसिडर करोगे जो एग्जेम्प्ट इनकम यील्ड कर रहे हैं. जो इन्वेस्टमेंट आपको टैक्सेबल इनकम दे रही है उससे रिलेटेड बिजनेस एक्सपेंसेस यू कैन नॉट डिसअलाउ. एंड दिस completely shuts down the department's practice of blanket disallowance. So what this means for you is if you hold growth mutual funds या फिर shares जो जिस साल उन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ है, they should not be included while calculating the disallowance under Section 14A along with Rule 80. So this can drastically reduce your interest liability, your tax additions and your ongoing litigations. So my advice as a finance professional is that you recheck your Section 14A computation. Ensure कि जो Rule 80D है mechanically पूरे के पूरे investment portfolio पे अप्लाई ना हुआ हो एंड शेयर दिस जजमेंट विद समवन यू मे नो, बिकॉज स्मार्ट प्लानिंग इज नॉट अबाउट टैक्स इवेजन, इट इज अबाउट knowing the law correctly and applying the provision. So stay legally sharp, follow for more such updates.